What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको जो लाइव टेप रीडिंग करी थी मैंने अपने मेंटीज के साथ। वो मैंने एक्सप्लेन किया है इस पर्टिकुलर चार्ट में। आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड दिस। मैंने कब स्टार्ट किया? व्हेन द प्राइसेस हैव ऑलरेडी फॉलन टू अ पर्टिकुलर लेवल। उसके बाद उन्हें ये समझाना कि मार्केट कैसे एक कंसोलिडेशन में काम कर सकती है और कैसे हम एक फ्रेमवर्क डिसाइड करके फिर भी छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी हंट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन देम द डिफरेंस बिटवीन हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियोज एंड लो प्रोबेबिलिटी सिनेरियोज। ऑर्डर फ्लो कैसे हम देख सकते हैं, टेप रीडिंग हम कैसे कर सकते हैं। अराउंड 1.5 आवर का सेशन था, आई गेस। 45 मिनट्स की वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ एंड इट इज द जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ दैट हैज एवरीथिंग दैट यू नीड। उसमें सब कुछ है जो आपको समझ में आएगा, फ्रॉम एग्जीक्यूशन टू एग्जिट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हेन थिंग्स कैन गो रॉन्ग। ऑलराइट, तो वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सो लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर आप इसे ज्वाइन करो बिकॉज यहाँ पे मैं चीजें अपलोड अपडेट करता हूँ लाइव मार्केट में। अगर 9/8 को मैंने भेजा था वेरी क्लीन हाइज शुड बी हंटेड इजीली। दैट मीन्स कि प्राइस वहां तक जा सकता है। एंड अगर आपको प्राइस वहां तक इन हाइज तक हंट होते हुए दिख रहा है, दैट मीन्स ये चीजें वहां तक जा सकती है। यस, यहाँ पे हमारा बायस गलत हुआ था लेकिन एग्जीक्यूशन में चीजें हमारे फेवर में आ सकती है। यही आपको समझना है। जब सही होंगे तो कैसे सही होंगे, जब गलत होंगे तो कितने कम गलत हो सकते हैं, इन चीजों को यहाँ पे आप समझ सकते हो। इस टेलीग्राम ग्रुप में सब कुछ अपडेटेड है। ऑल राइट, सो लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो गाइस। थैंक यू, बाय। कि अगर ये 50% टेस्ट होता है एंड फॉर समवन हु इज बुलिश, these things are going to be an idea for them to take a bullish trade. Okay, as soon as this breaks they should know कि काटना है, कुछ भी हो जाए काटना है। ये नहीं सोचना है कि लॉस जाएंगे तो नहीं। अगर ये टूट गया तो इसको काटना ही है। यू कैन नॉट रीथिंक ऑन दिस। Is it better to use 1 minute time frame while tape reading such market conditions compared to the 5 minute time frame? It's a personal preference at this point because when you give 5 minute, you give a higher time frame perspective, थोड़ा सा higher time frame perspective to understand more things कि exactly किधर जाता है. But I am very comfortable with 1 minute. Mm, you will have to do some क्या बोलते हैं, मार्केट कंडीशन तो एज सच ऐसा कुछ खराब नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन हियर। बट इट्स जस्ट दैट विजुअली यू कैन सी फ्यू थिंग्स ऑन 1 minute, उसका एक एडवांटेज है। विजुअली यू यू कैन सी फ्यू थिंग्स ऑन 5 minute, उसका एक एडवांटेज है। सो बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स एंड आई यूजुअली हैव बोथ चार्ट्स ऑन माय स्क्रीन, एक 1 minute का एक 5 minute का अलग से रहता है। सो आई डू टेप रीडिंग ऑन बोथ द टाइम फ्रेम्स, दैट्स व्हाट आई मेंट। ओके, फॉर समवन हु इज बुलिश will never exit their trade unless the price closes here. And we never got an opportunity because the price did not even close here. Okay. These are the few things that is going to save you from an incorrect trade. From an incorrect trade. ये spikes जो आती है ना, अगर आपको दिख रहा है, अब मुझे सच्ची सच्ची बताओ, for someone who is trading with me for a very long time, Vagish, Mansi, please answer this. When you are seeing these PD arrays acting as support, will you not ask yourself कि भाई ये अभी तक टूटा क्यों नहीं, ये अभी तक टूटा क्यों नहीं? There is something wrong. There is something wrong. This is how I can keep my stop losses very small. I can keep my stop losses very small. Okay. Now once again, need to drop. Are you going to share the recording, Aditya? Okay, yeah. Yes, I'll do that. Don't worry. So it's going to be there. Yes. Now once again, same thing. कंडीशंस अभी जैसे आप लोग सोच रहे होगे कि ये फेयर वैल्यू गैप तो टूट गया, अब क्या? बराबर, you guys have this problem, right, that this fair value gap has been broken now. What is next? How am I supposed to use this fair value gap? Should I remove this fair value gap? No, let it be there on the chart. Next candle or maybe a candle after this can still come down like this, can still come down like this. If it does, only then it will be helpful for us.
नहीं तो नहीं. What I'm trying to say here is, if somebody who is into a long trade, if somebody who is into a long trade will use this as an exit, will use this information as an exit of exiting at least 50% quantities, ताकि अगर यहां से वापस ऊपर जाते हैं तो ठीक है. लेकिन this is a sign that it is not taking support of the fair value gap of the discount PD array that you need to see. ठीक है. We did not get any entry based on the fact that price is trading above this particular VI. इसके नीचे क्लोजिंग आता, रीटेस्ट मिलता, इट्स, दिस इज समथिंग दैट आई वुड वांट टू बी वेरी इंटरेस्टेड टू शॉर्ट, बिकॉज वो एंट्री लेते ही सीधा मूव दे देता है. दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. एट दिस पॉइंट, दिस फेयर वैल्यू गैप, प्राइस सस्टेन अबव दिस, इतना समझ लो कि ये चला जाएगा. बट अगेन 50-50 चल रहा है अभी तक, आप समझ रहे हो. सो वी विल स्टिक टू वन थिंग, वी विल स्टिक टू दिस थिंग. वी आर नॉट गोइंग टू फोर्स आवर सेल्फ कि चलो लॉन्ग साइड भी देख लेंगे, शॉर्ट भी देख लेंगे. नो, आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस दिस. We're sticking to this, we're sticking to this. अगर मार्केट को बुलिश जाना है एट दिस पॉइंट, this fair value gap should be acting as a support. I should act as a clean support. Should act as a clean support because it is proving its worth right now. It's proving its worth right now. So for someone who wants to target this, again I'm saying this, for someone who wants to target this, what should they do? They should enter here, but where do you think is going to be their stop loss? Right here, right below this volume imbalance. For someone who enters with a risk reward of 1:1, उल्टा लगा दिए क्या? That is going to be their long trade. Okay? समझ लो इस चीज को, धीरे धीरे आपको समझेगा, एग्जैक्टली आपको समझेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. When you do this long enough, or maybe we will do this exercise multiple times. Are we in macro? 1249, 1250 is going to hit things. 1250 is going to hit. Let's see if we can break below this, come below this here. This is going to be a good thing for us. Volume imbalance. Why do you think is the fight? क्यों इतनी फाइट हो रही है इस पॉइंट पे? हम लोग क्यों ऐसा समझ नहीं पा रहे एग्जैक्टली कि हमें क्या देखना है? ये अभी तो हम लोग टिक चुके हैं इस चीज को लेके, बट बिकॉज देर इज नो हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस, दैट मीन्स ऐसा कुछ चाहिए जो बहुत क्लियरली बता दे हमें दैट प्राइस को वहां पे जाना ही है हायर टाइम फ्रेम पे. यस, डिफाइंड ड्रॉन लिक्विडिटी नहीं है. दैट इज वाई वी आर वर्किंग विथ 1 minute, 1 minute ड्रॉन लिक्विडिटीज. दैट इज वेरी टफ फॉर एनीवन टू प्ले अराउंड विथ. ओके, एज आई सेड, अगर इसके नीचे आ गया, इफ यू आर इन अ लॉन्ग ट्रेड, यू शुड एग्जिट 50% ऑफ योर क्वांटिटीज. डू नॉट हेजिटेट, क्योंकि ये ना इधर पे भी आ जाएगा. आपने जितना थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखा था, यू विल प्रोबब्ली स्टार्ट सीइंग अ लॉस वंस अगेन. ओके, इसको जाना होता तो इसको यहीं पे सपोर्ट लेके जाना चाहिए था. दीज आर द क्लूज दैट मेक्स मी फील कॉन्फिडेंट कि अब अगर भी अभी भी गिरता है, आई वांट टू सी प्राइस बिलो दिस. रियली वांट टू सी प्राइस below this VI. Again, we have created a fair value gap. Again, a good sign. You see this, ये क्या हो गया हमारा? Balance price range, a fair value gap on the left and a fair value gap on the right. So the price should never come back here. Price should never come back here. If that is happening, we can be, I mean, never come back, but fill तो पूरा fill ना करे तो ज़्यादा better है. Anyway, let's stick to thing. Let's stick to this. Next round liquidity and next round liquidity right here. अब वापस इसके ऊपर चला गया तो क्या? वी सिंपली सिट बैक, मतलब मार्केट को कहीं नहीं जाना है. मार्केट इज, इमेजिन
मार्केट गोज राइट अबव दिस वंस अगेन। क्या ही है, मतलब कहीं भी जाए यार, फिर अब ऊपर जाए नीचे जाए उसके ऊपर है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, वंस अगेन इफ इट्स गोइंग बैक अप लाइक दिस, दैट क्लियरली मीन्स कि कुछ तो हम लोग ने गड़बड़ करी है इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द फ्लो। ओके, दिस आइडिया इज बीइंग स्टिल सपोर्टेड, नथिंग। It's again really wanted to see it come down, but nahin. You're saving yourself from early entries, you're saving yourself from FOMO. That is more important. Why I'm doing this live, I mean, like, at a time जहाँ पे it's the toughest market condition, because अगर मैं आपको सिर्फ ड्रॉन लिक्विडिटी के पास आके ये दिखा दूं ना, ये आप देखोगे एंड यूल बी वेरी हैप्पी कि अरे आदित्य ने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा हो गया, यूल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट ये मैं बोलूंगा कि अरे ये नहीं दिखाऊंगा मैं, तब आप फंस जाओगे, बिकॉज दिस इज वेयर यू वांट टू अवॉइड दिस। क्योंकि देर मस्ट बी अ टाइम जहाँ पे बहुत लोगों ने ऐसी कंडीशंस में बाई सेल किया होगा। इमेजिन बाइंग सेलिंग एंड नॉट वेटिंग फॉर द करेक्ट अपॉर्चुनिटी, इट्स गोइंग टू हार्म सो मच। नाउ एट दिस पॉइंट इवन दिस बिकम्स वेरी रिस्की, इट्स टेकिंग सो मच टाइम। इसको गिरना ही था तो पहले ही गिर जाता ना। दिस इज द प्रॉब्लम विथ टेप रीडिंग, विथ ऑर्डर फ्लो अंडरस्टैंडिंग, यू आपको समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर इसको अभी भी गिरना है तो जस्ट डू इट राइट अवे, नहीं तो नहीं। फिर बाद में वो गिरे भी तो भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस, बिकॉज वो लुक एट द वे इट इज कंसोलिडेटिंग, इट्स नॉट रिस्पेक्टिंग अ फेयर वैल्यू गैप्स, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। वो नीचे आके भी एक लिक्विडिटी हंट करके वापस ऊपर चला जाएगा। दैट क्लियरली मीन्स दैट वी आर ट्रेडिंग इनटू अ कंडीशन वेयर थिंग्स आर नॉट क्लियर एट ऑल। मतलब आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज वेरी क्लियर। इन द होप दैट एक पॉइंट पे मोमेंटम आएगा, आप उस होप में अननेसेसरीली बाई सेल कर रहे हो। दैट इज गोइंग टू affect you a lot mentally. What is bank nifty up to? ठीक है, but who knows if it has created a day low, because this responsiveness is good. We have a fair value gap and an order block here, so just BPR bana ke it will go one side, that's for sure. But which direction? No clarity. 5 minute पे भी we are not getting anything. In the morning, I wanted to point out this void for you all, but I couldn't, but because I was traveling. Is that monthly FEG 50% BNF? Need to check that. Where is Bank Nifty? See, the IBDA is already marked here. Uh, monthly FEG 50%. Yes, it's at monthly FEG 50%. So it looks like all the drawn liquidities have been reached for, right? So can this bounce up? Maybe. Can this bounce up? Probably at this point, yes, it can bounce up. Because see, the problem again, guys, do not confuse yourself. What I'm trying to say here is, just because it is at an important level, that was your drawn liquidity.
Trading, the repricing part is easy, but trading the direction from here is not so easy. It's not easy. You will get two directions here. But here you know for a fact कि इसको गिरना ही है. Here you don't know कि इसको उड़ना है या नीचे गिरना है. You will have two directions. So that's why I say every time trade only the repricing part. Do not trade a direction away from it or below it. That's going to be very risky. Okay, because at this point it may want to go down and then maybe कल हो जाए ऊपर. That could be a possibility. But yes, this is 50% very nice. Let's see क्या हो सकता है. So looking at where is bank nifty is probably going up also. Everything has been repriced. We have no understanding of where, I mean, like, where is the next repricing? We're just using this and this as an information for drawn liquidities. That's it. That's it. Sorry. So you understood how the bearish order flow did not work out. I mean, like, we read the order flow, we anticipated something, but that bearish order flow never formed the way we wanted it to reach for this drawn liquidity. That means we can save ourselves from this consolidation. We can definitely save ourselves from this consolidation. You don't really have to buy, sell every single thing. Okay. अब इसके नीचे फिर से आ गया तो देन देर इज वेरी समथिंग वेरी रॉन्ग. उड़ना है तो फिर यहीं से उड़ेगा. उड़ना है तो यहीं से उड़ेगा. Still in the macro, if it wants to push up, it really wants to push up from here itself. नहीं तो नहीं. नहीं तो फिर से नीचे आएगा. It will spend some more time and then probably move somewhere. So again, that is not going to be an entry कि अरे उड़ना है तो यहीं से मैं यही लूंगा. No, I need something here ना. अगर सोचो आपके पास कोई वीकली ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे होता and then you are getting such conditions, तब ठीक है. That is the point. Things can play out in your favor. Okay, that is the point. Things are going to be high probability for you. Anyhow, if you enter here, where is going to be your stop loss? Right at this volume imbalance. Price should not even test this volume imbalance no matter what. Okay, price should not even test this volume imbalance no matter what. We have this volume imbalance right here. Okay, nothing like trust. What can you expect? The only things you can understand is कि BNF is taking support at the 50% of the fair value gap. That's okay. Price is not being able to go below this volume imbalance. That means if we want to take a buy trade, if this is not good entry, this is not nothing, you don't want to enter such conditions, please understand this. You don't want to do this. Okay. But if you have a bullish bias, this is how a stop. Okay. Wait. So you cannot see the stop loss. The stop loss is right here. I don't know why it doesn't show up. I'm putting it right here at this volume imbalance. ये टूटा तो पूरा लो ले जाएगा. That is a clarity. What we understood by tape reading कि this is acting as very great support. भले ही हमारा बायस गलत हो, लेकिन अगर इसने सपोर्ट की तरह काम कर दिया तो ये पुश कर देगा. भले ही मेरे सी, do not judge me with what I am doing here. I'm just trying to show you that if you have a draw on liquidity right here, if you have a draw on liquidity right here, you would want to understand something like this. And that is the point where things go in your direction right away, very quickly, very fast.
Where is the next buy order? Okay. So, can be wrong very easily. Don't force yourself thinking कि अरे ये trade opportunity. No, this is not a trade opportunity. What I'm showing is just this कि अगर इस trade को गलत होना है, this is the stop loss. And if this trade wants to work, it should never come here. It should never come here. लोग बोलते हैं ना कि अरे एक स्पाइक आ जाती है, फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा तो क्या, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, नहीं. This is the volume imbalance. It's balanced, completely balanced. If the price wants to go up, it should not test this. Okay, it should not test this at all. That's what I'm trying to say. At this high, I would like to take a partial 50 points. काट दो बिंदास आंख बंद करके. Why? Because that's a liquidity. I really want to see the price go right there. Okay, it's cut 100 because we don't know exactly where the price is supposed to go. So that's fine. अब मैं क्या करूंगा? Stop loss क्या? See, कुछ पता नहीं है क्या करना है exactly. But let's come here. Let's put my stop loss right here. Break even. कुछ नहीं पता है. You don't know anything where the price is supposed to go next. You don't you don't want to be into a trade so long जहां पे आपके पास सिर्फ ये लिक्विडिटी हंट करने की अपॉर्चुनिटी थी बस. उसके बाद आपको कुछ क्लैरिटी नहीं कि प्राइस को किधर जाना है. ओके, इतना नीचे आ गया है. दिस इज समथिंग कि आपने प्राइस पैसा देखा लेकिन आपने बुक नहीं किया. वेयर यू विल हैव सो मच रिग्रेट कि यार इतने देर बैठे रहे, पैसा देखा लेकिन बुक नहीं किया. वो रिग्रेट से बचाने के लिए आई एम जस्ट शोइंग यू दिस दैट यू हैव टू बुक इट विदाउट थिंकिंग, विदाउट गिविंग इट अ डाउट. मैंने 100 बुक किया है बिकॉज हमारे पास हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन नहीं था. यू बुक वन लॉट एट लीस्ट एंड देन कम बैक टू ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस. आपने क्या किया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट कि आपने अब इस पॉइंट पे आप गलत हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. एट दिस पॉइंट इफ यू गो इनकरेक्ट इट्स फाइन, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इग्नोर दिस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज कि इस पॉइंट पे आप गलत हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन आपने पैसा देख के पैसा सेव किया है. दिस इज गोइंग टू एड अप इनटू अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इन द फ्यूचर. बट एट दिस पॉइंट इमेजिन, अरे इतना पैसा देखा यार, कुछ बुक नहीं किया. अब आप सोचोगे कि अरे चल ठीक है, मैं अभी मैंने यहाँ पे 1000 देखा था, ब्रेक इवन दिख रहा है, मैं काटूंगा तो 1000 पे यार, नहीं तो मैं आज 1000 का लॉस ले लूंगा. इमेजिन, थिंग्स कैन गो अगेंस्ट यू सो क्विकली. This is the problem here. It's all about the mindset. It's all about the mindset. We were waiting for this. कभी trading opportunity नहीं मिला. We checked bank nifty. We identified bank nifty is at a support. Okay, nice. We checked that this fair value gap is acting as support. What did I say? कि इसको अगर यहाँ से जाना है, ये हाई लेना है, तो इसको यही सपोर्ट करना हो जाएगा. And if it really wants to go up, it should not test this VI no matter what. So what all things did I do here? I placed a logical SL. I placed a logical SL. Okay. I understood my target very well. I understood the right opportunity to enter a trade. Even into this consolidation, I was able to do all of these things. How will you do all of these things? Practice. You will have to share your charts with me. People do not share their charts with me. They think कि उन्होंने जो entry ले ली वही सही है. प्लीज शेयर योर एंट्रीज विथ मी सो दैट आई कैन करेक्ट यू कि भाई तुम जहां एंट्री ले रहे हो, आज पैसा बन गया है, बाद में नहीं बनेगा. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ऑलरेडी लिक्विडिटी हंट हो गई है. एज आई सेड 1 आवर टाइम फ्रेम. इस हाई के ऊपर क्या होता है? लिक्विडिटी होती है. डन. प्राइस केम बैक डाउन. वी डू द सेम थिंग ऑन वीकली टाइम फ्रेम. दैट्स इट. But this is very high frequency. This is very high frequency. It's not a cup of tea for you and me to do this live executions with 1800 quantities. No, the option prices, the market prices, market orders will not be in your favor. And you will have a very tough time going through this. All right. Any doubts as of now, guys?
कुछ चीजें समझ में आई, बिकॉज आई डोंट रियली थिंक सो कि हम लोग इतने डेटा में से कुछ निकाल पाएंगे. आई ट्राई टू शो यू समथिंग दैट आई कुड identify something. I placed it right in front of you. How to take a trade, how to manage it, how to close it. Okay, that's it. If someone who has a one lot into this position, कहाँ पे यहाँ पे entry हुई थी ना, this is still going to be a stop loss, and you put your trade here. That's it. This is still going to be a stop loss. If this trade wants to go up, it will never ever test this volume imbalance. It will never test this volume imbalance if it wants to go up. This is tape reading, where we understand the true order flow, where we know कि spike ऊपर ही क्यों आई, इधर क्यों नहीं आई spike. राइट, पीपल वुड थिंक अरे यहाँ पे कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. स्टॉप लॉस तो या तो इस लो के नीचे होना चाहिए, या तो इस लो के नीचे, या तो इस लो के नीचे लगाओ. Okay, but why are we putting it right here? Because we know that the price should not trade to this no matter what. It is already balanced. So people who are done with their balance price range sessions, they will understand this better. कि क्यों मैं बोल रहा हूँ. Again, it has created a fair value gap. If the price starts supporting this fair value gap, it is a good sign. It's a good sign. You can still stay into this trade. But if it this breaks, then it's maybe going to collapse or something like that. But just watch. If again I'm saying if the price really wants to go up, this is the VI that should not test. This is the volume imbalance that should not test at all. There's no way. Any doubts for now, guys? Any doubts? सब समझ में आया क्या हो रहा है? Why is the market consolidating? Still, it looks bullish, right? It looks bullish at this point. Everything looks bullish at this point. You you would want to see the price support this FVG to continue higher with momentum. This is the last support. ये गया तो सब गया. Any doubts as of now? You can see the price action from here. This is how we hold on to the trades. If I want to hold on to the, कब मैं इसको hold on कर सकता था? जब मुझे पता होता कि यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ है जहाँ पे price has to go like a magnet. I know for a fact, and you have seen this, right? I've shown this to you multiple times, where I will say a level and the price run towards it like a magnet. Once I know that, only then I would have held on to this trade after booking partials. इसके ऊपर partial काट लो, चाहे कुछ भी हो जाए. Whenever a high is hunted, do not stop yourself from cutting a partial. Do not. चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ नहीं करना, बट partial काट लेना. कोई डाउट है गाइस? प्लीज गो एंड आस्क योर डाउट्स. आई एम लाइव है हम लोग यहाँ पे सब कुछ. उस एग्जीक्यूशन में कुछ डाउट था कि ऐसा क्या है कि वो टाइम पे क्लिक हुआ, ऐसा कुछ था? कुछ है तो बताओ कि पार्शियल क्यों काटना है, क्लोज कब करना है, वो सारी चीजें. टेल मी. इफ नॉट देन इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. प्रॉब्ली यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो ठीक है, डीएम कर देना. जस्ट वॉच. व्हेन थिंग्स आर करेक्ट, द ऑर्डर फ्लो विल प्ले इन योर फेवर. The order flow will play in your favor. That's it. If things are correct, the order flow will play in your favor. This looks really nice, right? मतलब look at the candlesticks, how it's taking support above the 50% of the fair value gap and the high of this fair value gap. It looks so nice, so good. SL cutting. SL cutting में मतलब जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, पांच. Let me see. Why that 50% FVG 1 minute still mattered even after testing a lot of times, because it showed that it is acting as support. It is proving me its worth. कि देख लो भाई, मैं bearish I was a bearish FVG, but I'm not pushing the prices down. Instead, I am acting as support here. One, two, three, four. I'm not allowing the price go down. That means it is going to be a factor after knowing where is the trade context. After knowing the trade context, we pulled it out by looking at the void and by looking at the BNF 50%. That's it. So kind of a decider, isn't it? No, I said na, decider is this volume imbalance for now. जब तक ये टेस्ट नहीं होगा, मार्केट ऊपर जाती जाएगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा. ऐसा.
ओके, नाउ अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डांस ऑन दिस कि भाई मैंने तो यहाँ एंट्री ली थी, नहीं, मैंने आपके सामने यहाँ पे काटा, आई डिड ऑल ऑफ दिस. But what I am showing this is when you guys are not around, when I am in my own space, I am in my own game, I can, I have the ability, you have the ability, you will have the ability to be a participant of such traits. That's what I am saying. That's it. उसके अलावा कुछ भी नहीं. Okay. And we also trusted the fact 1250 to 110. ठीक है. Again, क्या डाउट था? एसएल कटिंग पे डाउट था, मतलब एसएल कब काटना है एज पर हार्दिक. आर यू टॉकिंग अबाउट ट्रेलिंग द एसएल? ठीक है. इज इट, जो देखो कटिंग से मैं दो चीज समझ रहा हूँ कि इज इट द रियल एसएल, जो असली एसएल है, वो कहाँ लगना चाहिए? नहीं, एक असली एसएल होता है और एक ट्रेलिंग एसएल होता है. नहीं नहीं, लॉस में जा रहा है कब काटना है मतलब? सो देखो, इस पॉइंट, हाँ, देखो, इनिशियली, दिस इज द प्रॉब्लम. मैं एक चीज सिंपल बताता हूँ. इनिशियली आई वॉन्ट एवरी वन to take that 1:1 trade. Why I'm saying this is because when you start taking these 1:1 trades, इस पॉइंट पे आप पूरा एसएल नहीं लोगे, इतना प्राइस ऊपर जा चुका है. इस पॉइंट पे योर एसएल नीड्स टू बी दिस फेयर वैल्यू गैप नाउ. It is already acted as support. Price should not come back here to act as support. So, what I'm saying is, at this point, you should first show me all of your 1:1 trades. Why I'm saying this is because when you start entering 1:1 trades, you start entering with a bigger stop loss. मतलब कि जब तक आपको ये वीआई मैंने नहीं बताया, आपको नहीं समझ में आता. आप क्या यूज करते? आप ये यूज करते कि इस लो के नीचे जाएगा मतलब एसएल जाएगा मेरा, एंड ये मेरा टारगेट है. दिस इज व्हाट. ये रिस्क रिवॉर्ड ऐसा क्यों दिखा रहा है? व्हाई इज दिस इन नंबर्स? ओके. ओके, देयर आर टू और सम. यप. समझ गया. जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस. हाँ. सो लेट्स से आई एंटर्ड हियर, आई पुट माय स्टॉप लॉस हियर. ठीक है, एंड वी बुक्ड आवर ट्रेड हियर. दिस इज 1:1.3. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, फॉर यू, you enter here, you put your SL here, sorry, target here, you put your SL here. You at this point do not have the understanding कि इसको इधर पे लगाना है तो क्यों लगाना है. राइट, मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा. बट व्हाट आई एम सेइंग हियर इज अगेन एंड अगेन कि जब तक आप इस प्रोसेस से नहीं जाओगे, आप अपने स्टॉप लॉस छोटे नहीं कर पाओगे. बिकॉज वेन यू वर टेप रीडिंग दिस, आपको खुद ही समझ में आएगा कि ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एंटर दिस, मेरा एसएल यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है. आई, यू कैन आस्क एनीवन इन दिस प्लेटफॉर्म हियर, जिसने भी ये किया है, ब्रह्मजीत, मानसी, then we have Nachiket, then we have Vagish. These guys have performed this very well. And they, I like, you can, I'm not going to say from their mouth, but did you guys see a difference in understanding the correct stop loss and correct entries? छोटे स्टॉप लॉस लगाने में प्रॉब्लम क्या होती है? ये चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका. अभी आपको बीपीआर नहीं पता है. बीपीआर की अंडरस्टैंडिंग जब होगी ना, आपका राइट स्टॉप लॉस यहीं पे लगेगा. एंड आपकी एंट्री, जी दिस वाज अ लेट एंट्री, बट ये एंट्री भी हो सकती थी, एंड थिंग्स कुड बी इवन बेटर, एंड इट विल बिकम बेटर. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ओके. if Vagish is listening, you can also, like, if it's true for you, you can tell us कि वो 1:1 से things changed, maybe एकदम से कुछ click हुआ, that okay, this is something that I want to look for, and things started making sense. For Brahmajit, he agrees to this. Mansi agreed as well. So when I say कि भाई पहले 1:1 करो, and be into a position जहां पे आप सिर्फ पूरे दिन में दो ट्रेड ले रहे हो, आप इससे ही ग्रो कर पाओगे. वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि एसएल एक्चुअली कहाँ काटना है. बिकॉज आई वुड से कि चलो ठीक है, यहाँ एंट्री ली,
यस, वगीश इज एग्रीइंग कि 1 मंथ पूरा यही किया था. एंड ट्रस्ट मी, दैट इज द पॉइंट ऑफ योर, दैट इज अ गेम चेंजर. बिकॉज हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे एंट्री ली है तो यही स्टॉप लॉस लगा देते हैं बिकॉज ये फेयर वैल्यू गैप है. बट एज आई सेड कि जब तक ये नहीं टेस्ट होगा प्राइस ऊपर जा सकता है. सो व्हाट विल हैपन, अरे आपका एक स्टॉप लॉस गया फिर ऊपर आ गया, फिर आपने री एंट्री ली, फिर आपने वापस वही स्टॉप लॉस लगाया फिर ऊपर आ गया, लेकिन आपने कभी यहाँ स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं. बट इंस्टेड अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा देते तो वो दोनों बार में ऐसे नहीं खाता आपका और ऊपर चला जाता. दिस एक्सपीरियंस विल टेल यू कि पहली बात तो आपका टारगेट जाता है, दूसरी बात आपका स्टॉप लॉस नहीं जाता है. दैट मीन्स आप क्या करोगे, आप अपने स्टॉप लॉस को कम करने पे वर्क करोगे और अपने टारगेट को बढ़ाने पे वर्क करोगे. दिस इज लिटरली एवरीवन इज डूइंग. सो इट्स फॉर एवरीवन, ट्रस्ट मी. आप फिर इन सब से डरोगे नहीं क्योंकि पार्शियल भी काट रहे हो, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट्स गोइंग टू प्ले आउट इन योर फेवर. क्लियर है हार्दिक? हाँ, यस. अभी भी बोल रहा हूँ, जब तक ये टेस्ट नहीं होगा थिंग्स आर वेरी क्लियर कि ये अभी और ऊपर जा सकता है. इट कैन गो अप. बट आई वुड लव टू बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ दिस ट्रेड व्हेन देयर इज अ हाई टाइम फ्रेम पीडी एरे. जो मेरे प्री एनालिसिस में मुझे पता है, अभी जो मैंने किया आपके सामने, इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन टेप रीडिंग एंड 1 मिनट अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट. और कुछ भी नहीं. एनी अदर डाउट्स? आई एम आउट वैसे टुडे, तो आई थॉट कि आई विल गेट सम टाइम, सो आई विल डू दिस फॉर यू ऑल, because it will be a challenge for me also, because I have no clarity. क्योंकि जब मैं मार्केट में नहीं था तब तो गिर रही थी, अब गिर रही नहीं है. सो इट इज अ चैलेंज फॉर मी टू शो यू समथिंग बेस्ड ऑन द रॉन्ग साइड. आई मीन लाइक ऑन द मेजर ट्रेंड तो बेरिश है, फिर भी हमने लॉन्ग देके दिखाया यहाँ पे. कोई और डाउट है कि आगे का प्लान क्या होना चाहिए आपका? बिकॉज आई गेस आई विल क्लोज इन 5 मिनट्स गाइस. एट दिस पॉइंट देख लो, फॉर पीपल हु वांट टू कीप बिगर टारगेट्स एंड जो फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं उनके लिए तो यही एसएल होना चाहिए. पार्शियल काट लो, उनके लिए यही एसएल होना चाहिए. बिकॉज एट आएगा, नीचे आ सकता है. नीचे, आई एम सेइंग वंस अगेन, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, इट कैन कम डाउन बट इट कैन अगेन बाउंस अप लाइक दिस. बट फॉर एन ऑप्शन ट्रेडर यू कैन नॉट थिंक ट्वाइस. अगर आपको दिख रहा है कि ये नीचे गिर सकता है, बस काटो. This probably is not the condition that you want to trade, not a market condition that you want to trade. Because when we enter, we usually see momentum. जैसे स्पाइक आया, उसके बाद एक स्पाइक आया, बस. मे बी इफ दिस सपोर्ट्स, वो स्पाइक कंटिन्यू करेगा, एक बड़ा स्पाइक और आ जाएगा. दैट्स इट. भाई ट्रेड नहीं लेना कोई. लॉस होगा तो यू विल फील कि फोमो में लॉस हुआ है बिकॉज एंट्री तो नीचे निकल गई एंड अपने पास कोई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी नहीं है, कुछ नहीं है. VI was tagged as decide. There's a question by Manish. Volume imbalance was tagged as decider as price at multiple tested and respected multiple times, same as FVG and event. Why is it termed as decided or decider over FVG? Okay, you can. Yes, good question here. Because understand, ये FVG टूटा, ठीक है, प्राइस नीचे आया. ये FVG टूटने के बाद इसको क्या मिल रहा है? इसको VI मिल रहा है. ओके, मतलब कि अगर VI टूटेगा तो ही मार्केट नीचे जाएगी. ठीक है, आई विल रिपीट दिस वंस अगेन एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन एन इजी मैनर. दैट लुक एट द पोजीशंस ऑफ these two PD arrays. VI is right here, fair value gap is right here. And look at the characteristic. The characteristic of VI is very clear कि जैसे ही वो फॉर्म हुआ है, it is being tapped once, twice, thrice, and price is not even testing it once again. When it went above this fair value gap, this fair value gap was breaking one, like broke above once, broke below twice, ऊपर नीचे किया. VI at this point is showing better characteristic, and also the fact that VI is below the fair value gap. That means if the markets really want to fall, it has to break below the fair value gap and below the VI to fall down. But another scenario क्या हो सकता है कि it is breaking below the fair value gap but
testing the VI once again and going back up. Again falling below the fair value gap, testing the VI and going back up. समझ रहे हो? Understood my point, Manish here? कि why did we selected VI at this point? Clear है? Great, great. सबको क्लियर है तो ज्यादा अच्छा है. So the first partial that you booked एकदम से you are locking in profits. It's very important. When you're not confident कि actual में price को किधर जाना है, you have to do these things. There is literally nothing else you can be safe of. I mean हमने सिर्फ एक फ्रेमवर्क डिसाइड किया था कि ये हाई जाना चाहिए, बस. दैट्स इट. वो हाई गया, हमारा काम हो गया. अब मार्केट कुछ भी करे, हमें लेना देना नहीं. ऑल राइट गाइस. If you have any doubts, I'll take just 2 minutes for you all. Just let me know कोई doubt है तो. If not, then I'll close this. Tape read this, maybe go through this recording once again. मैंने तो रिकॉर्ड नहीं किया है यार. देवल, आप हो ना इधर? हम्म. अब सब आपके भरोसे है. शेयर कर देना, ग्रुप पे शेयर कर देना सीधे. ऑल राइट, ऑल राइट. कुछ समझ में आया, कुछ नया, कुछ देखने मिला, पर्सपेक्टिव समझा. वी कैन डू दिस, आई कैन लिटरली डू दिस ऑल डे. बट क्या फायदा जब आपको उसको काम में नहीं डालना है, कुछ मतलब नहीं है. ठीक है. ये चीजें कर रहे हैं हम, तब जाके हमें समझ में आता है फेयर वैल्यू गैप कौन सा टेस्ट होगा, कौन सा नहीं होगा. ओके. जब तक देख लो, मार्केट तब गिरेगी जब ये वीआई टेस्ट हो जाएगा. अगर ये वीआई टेस्ट भी हो गया ना, खत्म है. खत्म है. ठीक है. आप देखो इसको खुद से. मार्केट कैन गो डाउन बिलो दीज इक्वल लोस. ओके. पीपल आर एंटरिंग हियर. बी वेरी माइंडफुल अबाउट दिस कि अगर आपकी एंट्री यहाँ हो रही है कि तो बहुत दिक्कत होगी. ओके. यस अरविंदर, विल डू दिस, डेफिनेटली विल डू दिस. इसको यूट्यूब पे करेंगे लाइव सबके सामने. नाउ इट्स टेकिंग प्लेस. ठीक है. अब देख रहे हैं यहाँ पे खुद ही, अगर ये वीआई टेस्ट होता है तो क्या होता है. लेट्स सी. एनीबडी हु वाज लॉन्ग, इसको यहाँ पे तो निकलना ही है चाहे कुछ भी हो जाए. व्हाई आई सेड कि ऑप्शंस में आपको केयरफुल रहना है. ये जितना ऊपर गया है ना, ये अगर 5 पॉइंट, ये 10 पॉइंट है तो ये 20 पॉइंट ले जाएगा आपके. दिस विल टेक अवे 20 पॉइंट्स. एंड यू विल नेवर बी इन अ सिचुएशन कि अरे यार पैसा देखा आज फिर भी पैसा नहीं कमाया. क्यों? दैट्स गोइंग टू हैपन अ लॉट. डन. जो सोचा था, जो बोला था, एग्जैक्टली exactly वही हुआ. आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द मोमेंटम कि भाई अगर ये टेस्ट हो गया, इसका सवाल ही नहीं है ऊपर आने का. इफ यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से समथिंग विद कॉन्फिडेंस कि सवाल ही नहीं है. आई यूज अ वेरी लोकल लैंग्वेज है जो मोस्टली मुंबई में हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. चांस ही नहीं है दैट द प्राइस विल गो बैक अप. इट डिड व्हाट इज सपोज टू डू इन वन सिंगल कैंडल. टेस्ट होना मतलब इट्स ओवर. इट्स ओवर. टेस्ट होना, आई डेंट इवन से कि ब्रेक हो, क्लोज हो, इस एट दिस पॉइंट. टेस्ट होगा मतलब गलत है. दैट्स व्हाई आवर स्टॉप लॉस वाज नॉट on the closing basis. Our stop loss was on the basis of test. समझो इस बात को. On the basis of test, not on the basis of closing. All right, guys. So this is where, and it took out the lows. Fine. As I said, you cannot be into a participant for a longer time. Why are you supposed to be a participant when things are already done, hunted, and all of this? You cannot do anything about it. All right. Cool. Guys, I think my work is done here. You probably learned few things. Go through this recording multiple times. You will get more scenarios to understand. We will do this probably once a week for everybody. If not once a week, at least once in 2 weeks. I've observed, it's a question from Arvinder. I've observed that once an imbalance is created,
in smaller time frames, it tests it inevitably. So would it be appropriate to no, 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 don't do that. Whatever I did here, you have to use this ये तो मैंने अभी आपको ट्रेड करके दिखाया, but do not use this to create a bias. See अरविंद, I've seen कि आप क्या करते हो, आप VI मार्क करते हो 5 minute टाइम फ्रेम पे, and you treat that as your objective. There is a very high chance कि वो VI unfilled रहे for a very long time, and when you expect it to fill, every time it actually goes up, and that is where your bias goes wrong, because at that particular point of time, the draw on liquidity was probably here and not here. So what is going to be more favorable? This. This was a sell signal. Now after there's a question from Vagish. Yes, but this is where आपको फिर भी एक entry चाहिए होती है for us to take short. This was very quick, very quick. मतलब yes, again, once again, it's not for me as a perspective. मैं ऐसे ट्रेड नहीं ले पाता जहां पे मैं लिक्विडिटी हंट होते ही शॉर्ट करूं. इट्स नॉट फॉर मी, बट इट कुड बी फॉर यू इफ यू कैन स्पॉट इट. It's going to be a difference between you and me. Okay, it's going to be a big difference between you and me. It's very important to understand कि अगर मैं ऐसे ट्रेड लेता हूं, आप ऐसे भी ले सकते हो. कमिंग बैक टू अरविंदर्स पॉइंट इज दैट, अरविंदर आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको वीकली डेली पे ज्यादा फोकस करना है. 5 मिनट वो सब पे इट्स गोइंग टू बी वेरी, क्या बोलते हैं, वेरी वेरी रिस्की इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात जब हो जाती है, बहुत कम हो जाए, बहुत लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा. Alright guys, so I'll end this here. See you guys, bye. They will please send the recording. Okay, chalo. Thanks, Adi bhai. Welcome, bye. Bye guys, take care. Yeah, yep.